Namaste, Jai Hind, and welcome to yet another Zara Hatke conversation here on the News 18 network. And I'm in conversation with the director of the Hemkund Foundation. नाम तो सुना ही होगा. There's hardly anybody who does not know about the kind of work that they've done. So Hartirat Singh, namaste. I say Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Nice to have you here with us. Thank you. Let's start with what is the Hemkund Foundation currently doing? Inception is what, sometime in 2010, so in about 15 years. 100%. So you are now where across about we how focus on three major areas, right? Education, healthcare, and disaster management. When it comes to education, we have India's largest free skill development center in Madhya Pradesh. That's called the Hemkund Foundation Gurukul. Then in healthcare, we have mobile medical units running all across. They're basically Chalta Firta hospital on wheels, similar to the Mohalla clinic, but basically on wheels. And then disaster, wherever there's a disaster or a calamity, we try to reach there within 3 hours. You did a lot of service during COVID, and also I think you were there in Kerala also. You were there whenever there have been floods, and it all started with what happened in 2013. That's Then right. were you there, I Hartirat? was there. I remember I was a At child. Hemkund Sahib? Yes, I was going there. It was an annual ritual for our family, right? I was going there, was stuck for about a week or more, and then obviously life turned completely from there. So was it at that time that your dad decided that he wants to do something? 2010 onwards, 10% of, so in Sikhi there's a concept called Daswand where you give 10% of your earnings, right? The family business always used to give 10% of their earnings, but then in 2013 dad realized, okay, there's not a value of money, it's all an illusion, and he would like to dedicate his life towards seva. That is when things changed completely for us. So, but then at that time, didn't you look at your dad and say, "आप सेवा करने जा रहे हो, हमारा क्या होगा? What are you going to do? I mean, I remember. What was the thought process?" I remember he sold his house off in 2013. Imagine the new house we were supposed to shift and move in, that was sold off. And as a kid, I was like, you like all the luxuries, right? I'm like, Correct. you're taking everything away. What is wrong with you? But then now, when I look back at life, I think it was the right call because the sense of sukoon, I don't think being a business tycoon वो आता. Like I don't want to be a corporate नहीं, पर guy. मैं हाँ आपने तकलीफ देखी. What was 4-5 दिन थे where you were without food and all? A week. हाँ, एक हफ्ता. हाँ जी. हाँ, खाना पीना नहीं, आसपास हर कोई बराबर हो गया, गरीब अमीर सब बराबर हो गए. तो then was it there that your father Irvinder Singh ji actually he decided कि ये करना है, कि वापस आने के बाद उन्होंने ये सोचा? There was an incident. तो वहाँ पे जेपी का एक डैम है. I don't know if you've been to Joshimath, but जेपी का एक डैम आता है वहाँ पे. My dad was actually a contractor of JP. Okay. But line लंगर कैसे line होती है? JP ने लंगर लगाया था, like biscuits and चाय का. My dad was right in front और उनके हाथ ऐसे थे. The JP guy actually recognized him because that was his project back then. And he's like, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? But his hand was like this for the first time. He's like, यार, God truly shows you his colors, कि हम लंगर लगाते थे, आज first time हम हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं. That is when he realized he doesn't want anybody else in the situation, and seva is the way forward. हाँ, so then when did he share that with you? I was there, I was watching it live. I was there, बच्चा साइड में नहीं खड़ा होता, लाइन है लंगर की, मैंने लाइव देखा था वहाँ पे. And within a week he actually went back to Uttarakhand, and that is when we got a call that we're going to sell off the house because we need to start the rehabilitation here. So I wasn't there on the same trip which where he went, but I got a call. I remember we were on speaker. My dadi was talking to him, and dadi was like, "You don't get the opportunity of building God's home again and again, so do whatever it takes." So Dadi had supported. Dadi had supported. Mom and me were pretty, like, मैं तो बच्चा था, मेरे को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है. But the wife is always, like the one who's putting the logic in. Correct. So we were pretty not okay with it, if I have to be honest. हाँ, फिर उसके बाद then when did realization dawn? Not 10 years later, but उसके बाद when did you decide? आपके पास choice ये भी हो सकती थी कि मैं अपना करूँ, आप अपनी सेवा करो, मुझे खुद की थोड़ा सेवा कर लेने दो. Exactly. ये आप कर सकते थे, but you decided to join forces with him. तो ये कैसे हुआ? I remember वैसाखी April 2013. उस टाइम पे छुट्टियाँ भी थी, वैसाखी you get a school off, right? So I went with him. That is when I realized that okay, my dad needs all the support, and as his son I have to do that, right? So even if it's just being with him, बहुत फर्क पड़ता है, अगर एक बंदा अकेला खड़ा है या फिर दो लोग खड़े हुए हैं, it makes a huge difference. And I think I was thrown into it, not gonna lie. A kid doesn't even know what's right or what's not, but I used to see the changes in myself as well, like becoming more humble,
लोगों का दुख समझना मेरे को आ गया था. That is when I realized that this is what even my true calling is, because it gives me a sense of sukoon as well. I was studying in Pathways, right? हाँ, You know what Pathways correct, is, what a school it is, correct. right? From seeing kids walking into flashing cars, the best cars probably in the country, I was in that school. मैं उधर पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल सेवा में. So even I wasn't very well accepted in school as well, कि यार, you know, we go to, for example, a Maldives in summer vacations. This guy is probably going to Uttarakhand and doing what there? So even in school, it was pretty hard for me to be accepted. पर कभी ये दिक्कत नहीं हुई? बहुत दिक्कत हुई. Faced a lot of bullying for it as well. A lot of racism. In Pathways, we have like people from different nationalities, right? Canadians, people from Russia. I started wearing a turban when I was in 8th grade. Imagine, because वो mental change तो आ रहा है. It shows physically as well, right? I started Correct. wearing my articles of faith proudly. हाँ. So I was faced with a lot of racism and bullying, but I kind of embraced it. I was like, कि अगर मैंने कर दिया, maybe I'm opening the way for 100 more kids that want So to. when you say racism and bullying, you've talked about it in the past. I just want to understand. Racism came because you looked different, Yes, because I look different. because you had a pug and you were this one. So what did they brand you as then? So तू तो हिंदुस्तानी हो भाई. भारत के ही तो उसमें exactly. क्या? But I was seen at differently, you know. Even my teachers used to think that this is radicalism. I remember they called in my parents कि ये क्या है, you know. Because I don't even wear like a regular Delhi style turban, right? I wear Correct. the traditional style. Correct. And they were like, ये सही रास्ते पे नहीं. I remember this chat, and my dad backed me up then. हाँ. कि नहीं, what's wrong with it? Just because he looks different, just because he's practicing his faith, doesn't mean कि that's radicalism. Fortunately, you know, they now realize that it wasn't radicalism when they see me serving the country. But back then it was difficult. It was difficult. How did you deal with it? आप अपने फादर से, अपनी मदर से ये जाके डिस्कस करते थे? देखिए, I used to tell my father every मैं day. मैं तो टेनेट्स फॉलो कर रहा हूँ. मैं तो जो किताब में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो सिक्खी के नियम है, मैं तो उसको फॉलो कर रहा हूँ. तो फिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? I mean, but I knew it's the right thing, right? History has shown how we have always served humanity, right? And I knew कि tried and tested path है, कुछ अलग नहीं है इसमें. And I used to have a conversation with my dad daily. I remember it was like therapy for me back Correct. then. हाँ. तो वो रोज बात होती थी मेरी, but he always backed me up. तो सर क्या कहते थे आपको? He's like, I'm sure you would have come troubled. yeah. कि यार I was like, पापा- मेरे जैसा कोई है ही नहीं स्कूल में. I used to tell him clearly, and then he gave me an analogy saying कि यार हीरे तेको बिखरे हुए दिखते हैं नहीं, right? Diamonds are preserved in a safe. Correct. Similarly, that is how we Sikhs are. हम हीरे हैं, हम कम दिखेंगे, but our value is a lot. हाँ, जब दिखेंगे तब चमकेंगे. Exactly, So that was his that's the analogy. beauty of Sikhi also. तो पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि जब आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, चाहे जिस भी स्कूल में जाएं, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी में आए, एट द एंड ऑफ द डे किताबें तो सेम होनी चाहिए ना? Did our texts, did our school books actually teach people about Sikhi the way it should be taught? I think they didn't teach us about any religion. हम उसमें फंस जाते हैं. अकबर बीरबल, you know, अकबर बीरबल will not help me. Like, why not teach kids finance? मेरे को आज तक नहीं समझ आता कि tax saving, you know, how do you do it, right? Why do you need a professional CA for it? Why can't you get, you know, like a normal person? It's a life skill to have, Correct. right? अब जैसे फॉर एग्जांपल जब सैलरी आती है वो HRA अलाउंस होती है, राइट? मेरे को आज तक नहीं समझ आता. मैं उसके लिए CA को बोलता हूँ कि भाई बता दो क्या करना है. क्या करना है? School didn't teach us all of that. They didn't teach us about. We would have been more respectful towards other religions if सिखाया होता कि यार, okay, why does a Sikh guy wear a turban, right? Why does he wear a kada? हमारी किसी बुक्स में पढ़ाया ही नहीं हमें. तो कब जब लोग आपके फ्रेंड्स कभी मजाक करते थे, कभी किसी ने लड़ाई कुछ हो गई तो उसने पग पे हाथ लगा दिया या फिर कुछ कह दिया, तो डिड यू एवर ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम कि भाई यार समझा तो करो, दिस इज हु आई एम, एंड डिड दे वांट टू लिसन, डिड दे वांट टू अंडरस्टैंड? आज वो दोस्त कैसे देखते हैं आप? So it was always a discussion, right? It was always literally like a discourse. We used to sit together and I used to give them. I was a history buff, right? So I used to tell them history में ऐसे ऐसे हुआ है, which is why it's happening like this. And then they used to get the logic. I used to be like, okay, we wear a turban because when somebody needs help, it's like a uniform, right? आप Yeah. दूर से पहचान लोगे हमारे को. Then it's great logic, right? Correct. And then they were like, ठीक है, makes sense. So whenever I gave them logic, they used to be very respectful towards it. So I feel there's a lack of communication or knowledge sharing that happens when we're kids. Does it irk you? And I know we are veering off the track a bit, but I have to ask you this. थोड़ा गुस्सा आता है जब सिख देखकर फिर उसको इमीडिएटली खालिस्तानी, सेपरेटिस्ट, ये इस एजेंडा से जोड़ने की कोशिश की थी. आपको लगता है
हिंदुस्तान में ऐसा होता है या फिर बाहर ये होता है? I mean, बाहर ज़्यादा होता है, you know, like the label that's given immediately. It's happening everywhere, I feel now, and it's kind of disheartening. कि क्यों यार इतना देश के लिए किया? You look at the freedom struggle, right? The most, Correct. and I can say this on record, Yeah. the most amount of contribution is by the Sikh community. जी. और आप फिर आज उनको खालिस्तानी label कर रहे हो. So it's disheartening, but then Guru Tegh Bahadur Sahib, right, the ninth Guru, he gave his life for to protect humanity and Hinduism, right? अगर उनको क्रेडिट नहीं मिला आज तक, देन आई काइंड ऑफ फील कि ठीक है हमें भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज. यू डू योर वर्क, यू बी फोकस्ड एंड अपने काम करो बेसिकली. सो आई टेक हिज स्टोरी कि आज तक उनको कोई ग्लोबल रिकग्निशन नहीं मिला, उन्होंने अपना काम किया, राइट. वी आर the people who are following the same religion, we might not get the credit, but is credit the end goal? No. I think the end goal is to do seva. End goal is to do seva. But ironic, no, that even in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjun the same thing. Karam that karo, phal ki chinta nahi. Chinta mat karo, and the end goal is to do seva. So our values are so linked. I want to come back and say कि जब आप हेमकुंड फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, so do you try and get them to understand who Sikhs are, what Sanatan is, what Hinduism is, how we are all linked, what our core values are? Is there an effort there, or are you just focusing on giving them basic life skills and education? We give them that? life skills and also teach them about every religion. Like for example, before even you mentioned, right, Krishna ji ne ye bola, I knew it because I myself have read the Quran and the Bhagavad Gita and the Mahabharata as well. I feel you need to be well versed in every religion. Even Guru Gobind Singh Ji in his 52 hukums at Nanded, it clearly specifies that you need to be well versed with every religion. For some reason, we don't do that anymore, but I feel it's important because I will understand you better if I know about your culture, right? जो मेरे साथ हुआ, why did that happen? Because people didn't know my culture well. I feel which is why it's important, and it's a conscious effort to make sure that the child knows about every religion. खाली सिख बच्चे तो नहीं है, मध्य प्रदेश में स्कूल है हमारा, राइट. 90% देम आर एक्चुअली नॉन सिख्स, बट तब भी कॉन्शियस एफर्ट है कि यार आपको हर कल्चर के बारे में पता होना चाहिए. वी सेलिब्रेट राखी, होली, दिवाली, दशहरा, ऑल द फेस्टिवल्स देयर विद प्राइड. And there has been a fair share of controversies along with accolades. So how do you take that when people look at what the work that you're doing? So are you really doing good work, or are you just skimming off the top, you know? I mean, I have faith in the judicial system. Whenever we've moved to the courts, they've always had a decision in our favor. So I know कि time जैसा भी चल रहा हो, the judicial system is very unbiased, and पता है ना कि दिल में कि यार कुछ गलत नहीं किया, तो we will come out victorious. हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर भी आप पर क्वेश्चंस हैं. Exactly, बिल्कुल है. हाँ, कोविड को फंड्स को लेकर. हाँ जी, FCRA मैं तो खुद बोलता हूँ कि FCRA भी वो किया था, but again the FCRA controversy we came out victorious. We haven't raised a single penny from abroad. तो मेरे को judicial system पे पूरा भरोसा है. हाँ, तो फिर ये कौन है जो आप पे आरोप लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? उनका कोई मोटिव आपको लगता है? जरूर होएगा मोटिव, राइट. You look at so many NGOs being constantly shut. Why? I don't get it. Mother Teresa Trust बंद. Khalsa Aid in India बंद. क्यों? So many Oxfam, so many licenses being cancelled. Why? I think with some of them, the source of funds, with their actual motive, there have been questions, and perhaps that's why there have been some aji-baji then, if they've could be, which is why we're still operational and they're not there. Yeah, if they're above board, then I don't think there should be any problem. So in your case, you're saying that you've gone to the courts and you're saying your books are clean, your intent is clean, so I've got nothing to hide. So for you, tell me what has been so far the most satisfying moment. So let's talk about the work that you do. So share with me one or two instances which make you feel यार जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ. I mean, कोविड में आपको याद होगा DRDO की गाइडलाइन थी 80 से नीचे जिसका SpO2 लेवल है, we will not take them and we'll only take 80 से ऊपर वालों को. Correct. I was like कि यार what about people who have an SpO2 level below 80? I was like, we will serve them. So a pregnant lady walks into our oxygen center. Her SpO2 level is at 40, which is the oxygen level. I'm like, यार DRDO तो नहीं लेगा इसको ना, हॉस्पिटल में बेड है. Like, we'll have to do something. We made sure she's stable. अब हमारा काम क्या, ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन सेंटर है ना, वी कांट रियली टेक केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडीज केस. बट आई वाज लाइक, बाय द बुक हर चीज़ नहीं करनी. what is our intent? Seva. We made sure she's stable enough, drove her to the nearest hospital, and the next day I actually get a photo on my WhatsApps of the child's photo,
एंड एक हफ्ते बाद वो मिठाई का डब्बा लेकर आए ऑक्सीजन सेंटर में, पीक कोविड, बट देर ब्रिंगिंग इन अ मिठाई का डब्बा फॉर अस, सेइंग थैंक यू. वाओ. सो आई थिंक इंसिडेंट्स लाइक दीज टेल अस कि सही काम कर रहे हैं. हाँ, पर कई बार ऐसा भी होता है ना, जिनकी आप मदद करने जा रहे हो उनका ही सब्र टूट जाता है, हम्म. वही आप पर चढ़ जाते हैं. बहुत ये बारी भी होता है, ये भी बहुत हुआ. बारी होता है, हाँ, राइट. कोविड में भी अब हुआ मेरे आपके हाथ साथ? में नहीं है, लाइक आई स्टिल रिमेंबर द वी यूज्ड टू हैव अ बोर्ड व्हिच हैड अ टैली लाइव्स सेव्ड वर्सेस लाइव्स लॉस्ट. हाँ. वो लाइव्स लॉस्ट भी हमारे ही ग्राउंड पे हुई है, राइट. हाँ. वी कांट सर्व एवरीवन, वी हैव लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल, हम्म. बट इंटेंट ये है कि जितनों की सेवा कर सको करो. वी माइट हैव टू ड्रॉ अ लाइन, राइट, कि हमें पता है कि ओके यू माइट नॉट इवन मेक इट. सो इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द पब्लिक्स मनी रिसोर्सफुली और वाइजली. अब मेरे को पता है उसका SPO2 लेवल 10 पे है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता. कर ही नहीं सकते. आप जिनकी आप मदद कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो. Exactly. रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं Exactly. है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. बट जो 3 स्ट्रीम्स आपने कहा जहाँ पे आप फोकस करना चाहते हैं, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट, और हाउ डिड विंदर सिंह जी? I don't know if you know about Maslow's theory. It tells you the needs Actual की है. self-actualization. Exactly, जी, जी. exactly. तो it's pretty simple. आपको रोटी, मकान और खाना मिलेगा ना, you will survive. It's similar here. Healthcare, you will stay alive, right? Education, you can actually you teach someone how to fish, and you know उनका काम हो जाएगा. It's the same analogy here. And disasters में, emergency में, we know कि सबकी हालत ख़राब होती है. अगर हमने ये 3 areas पे tick mark कर लिया, we know that a human can do well in life. If you're healthy, Yeah, you know correct. you'll do well in life. If you have good education, you'll do well in life. Correct. Disasters, do you believe of late we are seeing too many happen all around us? I think it's because the about- Prime Minister has also spoken about us, ki, say ki nature, and there needs to be a separate disaster fund that needs to be created, or corpus that needs to be created. Why do you think this is happening? I think global warming, 110%, right? Why are there so many? अभी उत्तराखंड में I think avalanche आया था, जी. right? Why is it happening? अभी तो गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं. The snow hasn't even melted yet, right? दिल्ली का हाल देख लो. It's so hot right now. मैंने आज तक नहीं सुना था. Like we used to wear It's the full hottest sleeves. March अभी तक का. Exactly. जी. So I think it's global warming. We need to be mindful of everything. Our carbon footprint, how our lifestyle is. हम घड़ी घड़ी चीज़ों के लिए फ्लाइट ले लेते हैं. लाइक चंडीगढ़ जाना है, फ्लाइट ले लो उसके लिए. बट डू वी इवन सी द कार्बन फुटप्रिंट? So I think we need to be more mindful about our lifestyle. So are you mindful as Hemkund 100 Foundation with so many institutions? 100%. Our schools are all green campuses. In fact, we have certifications for it. तो सारी हमारी एनर्जी जो सोलर से आती है, इनफैक्ट वी गिव बैक, यू नो, बिकॉज जो एक्सेस सोलर एनर्जी होती है, Correct. यू कैन गिव इट बैक, राइट. वी इन फैक्ट ग्रो आवर ओन क्रॉप एट द कैंपसेस. हम बाहर से नहीं लेते. तो and we have our own cows there. We actually use a technology called Sato, which only requires 150 ml to flush a toilet. If Okay. you see हाँ, normal regular correct. toilets में it takes about 8 to 16 liters. हम खाली 150 ml में we're using our toilets there. So we also bring in a lot of technology into our campuses to make them sustainable. एक cost कम हो रही है आपकी, and you're actually looking out for the future generations as well. But ये सब करने के लिए भी you need funding, right? And you're saying you're not taking international funding. हाँ जी. So where is the funding coming from? It is How people like you and me. I mean 90% of people actually. So I'll tell you NGO कैसे चलती है. You know, there's CSR and there's retail funding, like people and you and me, individuals. Correct. With every NGO, we see that 80% is actually CSR funding, like corporates donate, like for example a Facebook, right? Or a L'Oreal. 20% आम जनता देगी. हमारे साथ उल्टा है. 80% आम जनता देती है, 20% corporates. Why? Because the trust is so much. They've seen the work we do. क्या आप कर रहे हैं? एंड आपके जैसे लोग, लाइक अगर मैं आपको फ़ोन दिखाऊंगा मैसेजेस, उसमें 10-10 रुपये मेरे को लोग बैंक में आते हैं, उसके मेरे को नोटिफिकेशन आते हैं 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़. आम आदमी बहुत हमारे को डोनेट करता है. जो वो 10 रुपये आपने जेब से दे रहे हैं ना, उनके पास वो 10 रुपये शायद है नहीं देने के लिए, पर वो देना चाहते हैं. आई थिंक वो उस 10 रुपये के मायने किसी के 10,000 या 10 लाख रुपए से ज़्यादा मायने रखते हैं. मेरे शोल्डर पे उसका वजन ज़्यादा है. I'll tell you, we were during the first wave, हम लोग राशन देते थे जब जनता कर्फ्यू लगा था, राइट. तो हम एक लेन में जाके ना बार बारी रोज़ हम वहाँ पे खाना देते थे. माइग्रेंट वर्कर्स थे. एक बच्चा आया जो ट्रेडिशनल वो क्ले की गुल्लक नहीं होती, लाइक यू नो व्हेन यू पुट योर कॉइंस इन, दैट किड केम अप टू मी. उसे मेरी गाड़ी के बोनेट पे वो रखा एंड ही स्मैश्ड इट. और उसमें जितने भी चेंज थे, आई स्टिल रिमेंबर 326 रुपीज़ थे. इज़ लाइक ये मेरे को अपने लिए, मैंने सोचा कि मैं कुछ खरीदूंगा, बट मैं देखता हूँ आप लोग मेरे ही गली में सेवा कर रहे हो, तो ये आपके लिए. इमेजिन एन 8-year-old बॉय कमिंग अप टू. वाओ. सो I think that's real
perhaps पुण्य also, जैसे आप कहे ना कि भाई मुझे आप कितने भी अवार्ड दे दो, वो एक गुल्लक जो सामने तोड़ के चला गया ना, वही सबसे फर्स्ट बड़ा वेव को आप सोचो अवार्ड कितना टाइम हो गया, व्हाई इज दैट इंसिडेंट स्टिल स्टक इन still माय stuck in your mind, still stuck in your mind. In terms of volunteers, how many volunteers are you? How big an organization are you? We're How does across it work? 21 states, have about 500 active volunteers. During a disaster, we tend to, seek help and we do a volunteer call out. But on a regular basis, 500 volunteers हमारे पास होते हैं across 21 states. Across 21 states. So, but when you do for this volunteer call out, people step up? हाँ जी, I see the Gen Zs come in a lot. हाँ. मतलब they're very passionate. Yes, I want to ask you about this also. Is Yeah. this a trend? क्योंकि largely कहते हैं जो अगला युवा है disconnected है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. I don't even know. We don't even know whether they care for society or not. I want to know from your experience. Since you said Gen Z comes, They're stands very up. passionate, and they're very focused as well. Their productivity is double. And I can't even take a 60-year-old uncle to in a disaster. Correct. Gen Zs are super fast, they're efficient, they know how to use technology, they know how to use their network. For example, I was in Silchar, which is during the Assam floods, हाँ, right? Assam floods, yeah. अब मेरा वो local home ground नहीं है. हाँ, मैंने ट्विटर पे डाला, हाँ. some 19-year-old boy got to know कि यहाँ पे एक local warehouse, हमें पानी चाहिए था वहाँ पे. He actually sourced water for us. कोका-कोला की फैक्ट्री थी, that was operational, उसने खुद logistical सारा sort out किया, and the next day 10 trucks of water reached us. Wow. And that's through Twitter. They're so active. Even during the pandemic, we saw everybody verifying leads online, right? Correct. So I feel this generation is smart. They don't put in 10 घंटे, वो अपना वही काम 5 घंटे में कर लेंगे. 5 घंटे में कर लेते हैं. But do they? You think they have this सेवा भाव? I think they do. Is, Probably more is than it is हाँ, that's what I want. Is it more than the previous generation or 100%. perhaps that generation? millennials जो है ना, and I'll be honest about it, वो आते हैं 2 दिन सेवा करेंगे, फोटो डालेंगे Instagram पे, they'll try to act cool and then go. हाँ. The Gen Z will actually stick around for longer. Like एक महीना 2 महीना आप उनसे सेवा करा लो, उनको फर्क नहीं पड़ता. They're like, it's a lifestyle for us. We feel good about it. So the millennial has a shorter tenure of seva, but the Gen Z actually has a longer tenure. Like most, even do our- less, show more about it. The millennials, that's what they did to do. Exactly. It's all about hustle for them. हम hustle culture कहते हैं ना कि 70 घंटे काम करने हैं. ये एक्चुअली में वो 70 घंटे काम नहीं करेंगे, बट हसल कर लेंगे उतनी. हासिल कर लेंगे उतनी देर में. तो एक मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, यू थिंक हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं 1 साल का कम्युनिटी सर्विस, मैं नेशनल सर्विस अगर आप इसे कहें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ौज में दौड़ा दो या इधर दौड़ा दो, मैं कह रहा हूँ नेशनल सर्विस, यानी आप कम्युनिटी में जाके कुछ भी करो. आप जैसे स्वच्छ भारत का प्रोग्राम हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, आपको लगता है 1 साल हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए. आई मीन इन माई स्कूल इट वॉज द IB बोर्ड, द इंटरनेशनल बैकलॉरेट, राइट? उसमें आपको पास नहीं करते थे अगर आपके सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स ही नहीं कम्युनिटी सर्विस का. और ऐसे नहीं कि आपने चिट्ठी डाल दी, दे विल एक्चुअली वेरीफाई इट. इमेजिन. सो इट यूज्ड टू बी सच अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एज किड्स यू टेंड टू एंजॉय लाइफ. हम गेम्स खेल लेंगे, वील प्ले क्रिकेट, बट कम्युनिटी सर्विस इज नॉट वेरी, लाइक नॉट एवरी अदर किड वुड डू इट. इट वाज कॉल्ड CAS, action community action service. Merely mandatory tha. Why can't we make it mandatory for all the CBSE, ICSE boards as well, right? You will turn out to be a much better human being. Yeah. You will be more empathetic and sympathetic towards people. And you think we also will understand our country and its people a little more? 100%. Like अभी न्यूज़ आई थी कि पंजाब में पंजाब लैंग्वेज अभी कंपलसरी हुई. अब जाके आई एम लाइक, अरे आपने अपने ही स्टेट में आपने लोकल लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं किया. नहीं किया. हाउ विल द चाइल्ड बी रूटेड इनफ इनटू द कल्चर, राइट? तो आई फील वी नीड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस. आई एम सीइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर श्योर. लाइक चलो देर आए दुरुस्त आए, बट आपने कंपलसरी कर तो दिया ना पंजाब में. We should do that across the country. We should know about each other's culture. India is such a beautiful nation. It's so diverse. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं साउथ में मान लो बॉम्बे से बैंगलोर जाऊंगा, इतना डिफरेंस है कल्चर में, राइट? लाइक आई हैव अ डिफिकल्ट टाइम सीइंग इन कनाडा बिकॉज दे डोंट नो पंजाबी और हिंदी, राइट? बट मेरे को पता ही नहीं है, राइट? व्हाट इफ आई वाज वेल वर्स्ड इन ऑल द लैंग्वेजेस? इट वुड हैव बीन सो कूल. कभी आपको इन खालिस्तानी एलिमेंट्स ने कभी आपको परेशान किया? कभी अप्रोच किया? You scroll through my Instagram, you'll see so much of hate every day. So during winters, I have this army jacket of mine, right? And I always wanted to be in the army as a kid. तो मेरे पास जैकेट है. मेरी तरह ही है यार. Exactly. तो उसमें ना इंडिया का फ्लैग. नेक्स्ट लाइफ मेरे को यही लगता है इस साल इस जन्म में अच्छे पुण्य किए तो अगले साल कम से कम अगले जन्म में कम से कम Exactly. I was like देश की सेवा मिलेगा. करनी है, right? तो उस पे एक पैच है इंडिया का फ्लैग का. The moment I wear that jacket, I get so much of hatred. कि यार क्यों? Like and I started writing it in the तो ये सब captions. लोकल है कि इंटरनेशनल? International, 110%. They have anonymous pictures. कोई मतलब रियल बंदा नहीं है बिकॉज व्हेन यू नो आई ट्राई टू डिग इन कि कौन है, क्या है. ऑल एनोनिमस अकाउंट्स, हेट अकाउंट्स. आई एम लाइक व्हाई?
क्यों हो रहा है ये? लाइक रिसेंटली ऑल्सो आई बीन गेटिंग सो मच ऑफ हेट बिकॉज आई डिड सेवा एट द कुंभ. हाँ अब मैं ये नहीं देख रहा वहाँ पे हिंदू है, मैं देख रहा हूँ कि वो इंसान है, उसको खाने की ज़रूरत है, तो हम सेवा करेंगे वहाँ पे. नाउ पीपल इन द डायस्पोरा अब्रॉड स्पेशली देव गॉन क्रेजी कि क्यों कर रहे हो, ये है वो है. हम लाइक अरे भाई, इंसान को मैं पूछूंगा थोड़ी आप अपना धर्म बताओ पहले, मैं आधार कार्ड थोड़ी मांगूंगा. हाँ. वी विल सर्व ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम एंड व्हाट योर रिलीजन इज. But do you see Sikhi and Hinduism separately as a person? आई मीन इफ यू टॉक अबाउट लॉ, हाँ. हमें तो केशाधारी हिंदू बोला गया. आई डोंट नो इफ यू रेड द आर्टिकल, Correct. राइट? एंड सनातन is there, Sikhi is there, Buddhism is there. All of them are different, right? We are all brothers and sisters. Like Guru Gobind Singh Ji says, "Manas ki jaat sab hai, ek hai pehchan." वो recognize the entire human race as one. But I feel that every culture and identity is different. You feel? No, because I'm just saying that when you say you did Seva in Kumbh, there was a there is the Nirmohi Akhada, which is a lot of Nirmal Sikhs- Akhada. हाँ, In fact, I Nirmal made a Akhada reel है on it that I think went to 5 million or 6 million views. There are 3 akhadas to be precise from Sikhi. The Nirmalas, the Udasis as well. Udasis are actually Guru Nanak Dev Ji के जो जी. बच्चे हैं उनकी lineage है, right? We went there as well. We are all brothers at the end of the day. मेरे लिए मुस्लिम भी उतना ही क्लोज है जितने लिए मेरा हिंदू है. I have Muslim friends as well. I am sitting with you, right? I'm not discriminating. Correct. So in fact गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर भगत कबीर की बानी है, जी. शेख फरीद की बानी है, राइट? Right. खाली कुछ सिख गुरुज हैं, बाकी सारे देर एक्चुअली फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. Right. I tell this to people that Guru Granth Sahib is actually Jagat Guru. वो सिखों के गुरु नहीं है. It is there for everyone. It is. So I'm just saying, where do you think this is narrative shifting? See, there is a history, right? The 10 gurus are there. There's a huge thing, at least from the 14th century onwards, or 13th century onwards. There is evidence of Sikhi in here in Bharat and across the world also. Do you think that there is an effort to try and break this link, de-link this generation and the next generation, and start everything from what happened in '84? Yeah, 100%. Huh? I don't know why. And now let me ask you, Hartirath, how do we change that? How do we change that as a people, as a society? Because in the long run, it's not going to be healthy for I anybody. mean, I'm using my platform, right? Like, हाँ. मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है उन 3 सेक्ट्स के ऊपर जो कि वहाँ कुंभ में जाके सेवा कर रहे हैं और दे अटेंड कुंभ. मेरे साथ तो कोई लिंक भी नहीं है, राइट? Why did I make a reel to raise awareness, right? Why do I tell people openly on my Instagram कि यार Guru Granth Sahib also mentions Ram Bhagwan. You know, they mention Ram, they mention Shri Krishna. Why do I talk about it? To tell people कि भाई अलग अलग नहीं. We are brothers, you know, we are all sisters. There shouldn't be this hatred. It deeply hurts me when I see these incidents happening in Canada कि spray paint मार दिया, ये कर दिया. From both communities, I wouldn't pick one. आप किसी का मंदिर खराब करो, आप किसी का गुरुद्वारा खराब करो, क्यों? If you look at Punjab, it's always been a very beautiful state. You know, उसमें पंजाब में पंजाबी कितने हैं पंजाब में? हाँ, correct. Not even more than 10%, right? हाँ. पर तभी हम हार्मनी में रहते थे. Why is there a divide constantly? It's like what the British did, तो divide अभी and लग rule. रहा है कि पंजाब में ये माहौल थोड़ा खराब हो रहा है. आप तो ग्राउंड पे काम भी हाँ करते जी. I mean, I see कि इतनी एकता जो पहले होती थी नहीं है. Because what is the narrative being run on the media? And I'll speak, you know, मैं पूरे हक से बोलूँगा हाँ, कि please, मीडिया में ही narrative हम उल्टे रन करते हैं. क्यों? तो क्या करना चाहिए, कैसे करना We चाहिए? have discussions like these more often. हाँ, वो तो I करेंगे, think वो तो हमारे कर ही लोग रहे भी हैं, वो तो डरते कर हैं ही रहे मीडिया में आने से. I'm being honest with you कि अरे कुछ उल्टा हम सोचते हैं ऐसे they will put us down. Why? आपका कोई हिडन एजेंडा थोड़ी कि आप मेरे को नीचे करोगे, right? So I think both the parties I need to think come डर together. उनको ये भी है कि अगर परिवार के किसी को अगर उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया. सर I मेरे think पास भी so- मेरा पास भी परिवार है, मेरे उस अंदर भी वो डर है. बट कितने टाइम तक आप डर रखोगे? You can either decide to stay shut or you decide to speak up so your future generations are secure, right? I don't want the future generation to be full of hatred. I want them to be how times used to be. Like मेरे बचपन में when growing up इतनी hatred नहीं थी. मैंने खालिस्तान वर्ड तक नहीं सुना था. आप सोचो आज मैं रोज ही सुन रहा होता हूँ. लाइक I open Instagram, Faye D'Souza की post, you know, I follow Faye, right? कभी ना कभी हफ्ते में एक बारी the word खालिस्तान will be there कि आज ये खालिस्तानी टेररिस्ट, आज ये खालिस्तानी एक्टिविटी. हमने कहाँ से हो रहा है ये सब? हाँ, हमने तो खालिस्तान ज़्यादा बोलना ही बंद कर दिया. हम तो कहते हैं कि जितना आप उसको बोलोगे उतना आप उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हो. तो we give it Like different do we used to label analogies, yeah. people who were criminals पहले, हिंदू criminal, सिख criminal? आज क्यों हो रहा है ये?
No, I think it's also because there is a ulterior agenda and from abroad and it's not happening here. क्योंकि उनको करना यहाँ पर है पर यहाँ दिखते नहीं है क्योंकि यहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे, यहाँ उनकी पिटाई हो जाएगी, लैंड करें एयरपोर्ट पे 10 लोग पहले हमसे पहले खड़े होंगे मैंने उनको इंस्टाग्राम पे सबक सिखाने इनफैक्ट के लिए 2 दिन पहले रील डाली थी where I was like I haven't seen any Indian asking for Khalistan. Yeah. I'm like भाई एक तो दिखाओ मेरे को. Yeah. I'm like यहाँ पे कोई, मैंने कहा बाहर वाले क्यों बोल रहे हैं? I'm like हम खुश हैं. हाँ. You know, we don't want Khalistan at all. Who is raising the call for it? मैं Correct. यहीं पे खड़ा हूँ, राइट? आप मेरे को Correct. 10 लोग दिखा दो कौन है. करेक्ट और जो बंदा ये कह रहा है वो खुद ही सिक्की के टेनेट्स फॉलो नहीं करता तो फिर क्या Sikhi is all about serving humanity. If you're asking for one piece of land, how will you serve humanity? हम अरदास रोज़ करते हैं कि जो गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं, उनकी सेवा संभाल का मौका हमें देना. If you ask for Khalistan, ना, what about Gurdwaras in Patna Sahib, for example, Guru Gobind Singh Ji's birthplace? What about Hazur Sahib in Nanded? How will you even maintain these Gurdwaras? What about your people living outside of Punjab? If you logically ask for Khalistan, right? Correct. आप संभाल ही नहीं पाओगे. What about if you look at it politically and with थोड़ी समझदारी, you will become a landlocked nation. On one side you'll have Pakistan, on one side you'll have India. आप ट्रेड किसके साथ करोगे? हाँ. तो जो भी पढ़ा लिखा इंसान होएगा ना, वो कभी ये मांग करेगा ही नहीं. नहीं और अगर करता भी तो राजा रंजीत सिंह जी की जो एम्पायर थी वही मांग लेते. Exactly. आपने तो वो भी नहीं मांगी. हाँ, exactly. आपका तो मैप तो पूरा जो ननकाना साहब है और उसको पूरा करतारपुर साहब एंड दैट एंटायर और लाहौर को तो कैपिटल बनाना चाहिए तो वो भी नहीं मांग रहे. His Raj was right from Kandahar until like Delhi, Lahore as well. Correct. तो वो सब तो है ही नहीं. चलिए फाइनल 2-3 questions and let's swing back to what you're doing. So I want to know, you started early. You started helping with your father. Now your big project is this Madhya Pradesh project. So what next? And where do you see this going further? I mean, I feel that this project is going to change the education system in India. We've already received calls from the neighboring states कि यार अब हमारा actually the state governments कि ऐसा मॉडल आप बनाओ हमारे स्टेट में भी. I was like यार फंड्स भी होने चाहिए, राइट? पहले एक अच्छे से रन करेंगे and then we'll replicate these models into different states because जो इंसान के घर में आज 50 रुपए नहीं है टू अफोर्ड अ रोटी, राइट? You can't take them through the process of grade 1, grade 2 until grade 12 and then college. They need roti today. With skill development, within 3 years, you can actually get them employed at a salary of 20,000 rupees. We have MOUs signed with all the big multinationals कि ये हमारे यहाँ से hire करेंगे. Actually, the last year of the course, a company like a Mahindra would come in. They would train the people the way they need them, our students, and then hire कर देंगे. We're also forging partnerships, forming partnerships ताकि हम लोग इनको employment दे तो सकें. कैसे रिएक्ट करते हैं लोग जब आप इनको अप्रोच करते हैं? The companies, हाँ. they're actually like आप हमारी hiring problem ही solve कर रहे हो. They're like we run lakhs of ads on LinkedIn or your Naukri.com. They're like we तो need people. They're like आप हमारी problem भी solve कर रहे हो. तो वो तो खुश हैं. और उनको ट्रेनिंग उनकी वहीं पे हो रही है, कैंपस में हमारे पास जगह है. तो अब क्या क्या स्किल्स वहाँ पे सिखा So रहे हैं? anything from, for example, we actually teach them how to make games as well. अरे वाह. Gaming उनको सिखाते हैं, photography, video editing, गाड़ी ठीक करना, mechanic, plumber, electrician, any job which will give them a salary of 20,000 rupees. So that's how many skills overall that you're teaching? there? That's more than 15 skills and constantly adding. You're constantly adding, yeah. We've tied up with the National Skill Development Authority as well. कि आप भी अपने courses लाइए, ठीक है? हम we're tying up with universities in the US. They're in process right now ताकि हम उनको अच्छी education दे पाए. In fact, my videographer and editor, he was actually working at Domino's. Yeah. Imagine, he's not a full-fledged वो Domino's में काम करता था वो. Imagine, that is what we want कि elevate करो लोगों को. And he's right here. Like, I mean, 20,000 salary होती है कि Domino's में. Today he's earning 50,000 rupees. Do you बस. see that elevation? तो आपने उनकी लाइफ में एक स्टेप ऊपर उनको यार अगर उठा मैं दिया. अपने लोगों के लिए नहीं करूँगा तो मैं किसके लिए करूँगा? I don't want to go to the US and raise employment. तो आज कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके गुरुकुल में? अभी 2-2.5 साल हो गए इसको? एग्जैक्टली 1 साल खत्म होने वाला है. पायलट हम लोगों ने कर लिया. April onwards is when we obviously bring in the new batch. And I feel we have a waiting list of more than 2,000 people. वाह. Our capacity is only 1,200, but waiting list में 2,000 बच्चे हैं. बाबा जी ने चाहा 2,000 भी हो जाएंगे. Exactly, उसमें कोई ये नहीं है. exactly. So कोई नेक्स्ट स्टेट है जिसने कि आपको कहा है कि एक बार ये हो जाए? ये तो उड़ीसा- आप ये आप कहाँ खंडवा में कर रहे हैं? हाँ जी, मध्य प्रदेश में. उड़ीसा गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है. We're like, let's take it slow. Because we want to ace this model first, right? We want to make it a model where people actually see it and replicate it. I don't want Hemkund Foundation just to do it, right? हम कर भी नहीं पाएंगे. I want hundreds of other people to step in and improve the education system of our country. So is there a basic filter for taking people in? Garibi, poverty.
नहीं, in terms of education levels, ability नहीं। levels, कुछ भी नहीं है। जिनको कोई नहीं लेता हम उनको लेते हैं, आप जिसका उनको कोई लेते नहीं हैं। हमें वो चाहिए बच्चा। क्या बात है। लाइक इन फैक्ट देयर वाज अ डेफ एंड डम किड वी टुक एंड वो तबला सीखा उसने और तबला बजा, इमेजिन आई वाज शॉक्ड लाइक कैसे। हाँ, उनका एक नेचुरल सेंस ऑफ हाँ रिदम एंड होता नहीं है, उसको ऐसे पता ना नहीं कैसे कैसे यहाँ सीख पे लेते हैं। हाँ एंड आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक यार ये क्या है, लाइक बट वो सिंक में कैसे रहेगा हारमोनियम के साथ। आई वाज शॉक्ड। पर वो वाइब्रेशंस पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने देखा है, ये मैंने हमने केस स्टडी की थी और फिर कहा कि भाई आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप कैसे, और आप बोल नहीं सकते तो बोल के भी आप नहीं इशारा कर सकते, तो आप कैसे पकड़ रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि जो वाइब्रेशन है उनकी एक एबिलिटी है कि वो सोख लेते हैं, दे नो कि, और एक बार वो रिदम लय पकड़ ली और तब फिर छोड़ना नहीं है एग्जैक्टली। उसको। और मैंने हारमोनियम Simple बजाया उस like that. बच्चे के साथ में, इमेजिन आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक क्या हो रहा है। क्या बात है, अमेजिंग हरतीरथ, you're doing some fantastic Thank you. work and I only hope and pray that your body of work, your service to humanity, Thank you. it only grows. Lovely you. speaking with you. Thank you, Thank you same so here. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.